Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss the electromagnetic induction, JEE means PYQ. So first we'll start with the January shift. So ours will be the January shift. The chapter name is Electromagnetic Induction. Fine. So we'll start with the first question. A rectangular loop of sides 12 centimeter with its sides parallel to x and y axis. X axis length will be 12 centimeter, y axis 5 centimeter. Moves with a velocity in the positive x direction in a space containing variable magnetic field in the positive the direction. So we have here, first we'll start with the x and y axis. Right. Okay, this is the coordinate system. We'll draw it. A problem, we can call it as to be a tough, little bit tougher. In general, JEE means will be little bit formula based. This is little bit asking, you can see the question itself is lengthier based on two different ideas. Positives containing a variable magnetic field in the positive z direction. Means the field will be directed along positive z axis. It contains a rectangular loop. So we'll bring that loop. Okay, this is a loop. Okay, fine. या ये जो लूप है तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे है कितना स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है और ए 15 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. ओके फाइन. देन सो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये जो वेरिएबल है ना. So it's telling like in a space containing a variable magnetic field in positive, the field has a gradient of, what do you mean by gradient? जो क्वांटिटी जो स्पेस से चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं. सो जो क्वांटिटी विथ टाइम इफ इट चेंजेस उसको हम रेट बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया कि ग्रेडियंट दे दिया है. सो ग्रेडियंट बोले तो dB by dx. This is equal to 10 to power of -3 Tesla by centimeter. Will convert (10 to power of -5 Tesla per meter). So then this should become equal to dB equal to 10 to power of -5 into dx. इसका value depends on x. This point is x equals 0. So at x equals 0, the field is 0. At any distance x, let it be b. So इसका value of 10 to power of -5 into x. B is variable. B is variable. And okay, this is a meaning gradient, a quantity which varies with space. जो भी quantity अगर x, y या z direction से vary होता है उसको हम gradient बोलते हैं. Okay, fine. Next, और एक along the negative x direction. So ये जो magnetic field vary हो रहा है, this is varying along negative x direction. So as x increases, so this negative sign यहाँ पे हम ले लेंगे. Okay, fine. इसको होने के बाद नेक्स्ट वो ग्रेडियंट का dB by dt. थोड़े से dB by dt कितना दिया है 10 to power of -3 टेस्ला पर सेकेंड. फाइन. इसका मीनिंग रेट मीन्स dB by dt. ग्रेडियंट मीन्स dB by dx.
तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सर इसमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? यस, बोथ आर मैग्नेटिक फील्ड ओनली, सो यू राइट दिस इज B1 बेटर। इसका हम B1 लिखेंगे। ये जो टाइम से वेरी होता है, लेट दिस बी B2। द सेम मैग्नेटिक फील्ड, इट वेरीज विथ इन स्पेस एंड ऑल्सो इन टाइम। Varies along x-axis. This is varies with the time. Okay, agreed. नेक्स्ट इसका ईएमएफ ले लेंगे। सो ये जो रॉड है 1 2, इसका नाम देंगे 1 2 नंबरिंग, और ये जो रॉड है 3 4। मोस्टली ईएमएफ फॉर्मूला विल टेक इट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप का रेजिस्टेंस कितना है? 6 मिली ओम। There's a resistance of the loop also given. Will work out here. What is EMF induced? Motional EMF formula. This problem belongs to motional EMF. So what is the formula for motional EMF? E equal to BLV. First we'll calculate EMF. यहाँ पे हम EMF induced across the rod 1 2 ले लेंगे। So वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B12। उसका लेंथ कितना है? लेंथ L12 और वेलोसिटी V। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है अलग है? So B12, it varies with x। इसको x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? So 0. So what is the magnetic field strength at location of this side, at side 1 2? Because यहाँ पे तो x equal to 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो यहाँ पे? आपको 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 1 2 विल कैलकुलेट, पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 1 2 इट विल बी 0। इस पोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड एट 5 4, मैग्नेटिक फील्ड एट 5 4 और से 3 4, इसका वैल्यू हो -10⁵। एक्स का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे 12 आप ऑन व्हाट बेसिस लिख रहे हैं? एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? इफ यू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच? 12 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 12, देन विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ रॉड 3 4। इसको हम नाम दे देंगे B12 B34। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। B12 0 हुआ, लेंथ ऑफ द रॉड 5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 5, ए 0। सो नो EMF इंड्यूस्ड इन दिस रॉड। इस रॉड में EMF कुछ भी इंड्यूस नहीं हुआ है। द रीजन फॉर दैट, द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज 0 इस रॉड के लोकेशन पे। देन व्हाट EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड 2 4? EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड 2 4, 2 4 में भी 0। हाँ, क्यों 0 है? बिकॉज द लेंथ L बार L24 is parallel to velocity, no? अगर जो रॉड का वेलोसिटी है, जिस रॉड का जिस रॉड में वेलोसिटी पैरेलल रहता है, सो इस उसमें EMF इंड्यूस विल बी 0। so this rod no EMF induced, even this rod also. The reason for that, because the length are parallel, huh? Similarly L13 equal to 0। the reason for that, EMF किस लिए 0 है बोले तो E130। why E130? because L13 is parallel to velocity। there's a basic concept of EMF induced, motional EMF का। ओके, नेक्स्ट रॉड E34 ले लेंगे। E34, मैग्नेटिक फील्ड B34, लेंथ L34 एंड वेलोसिटी V। लूप का वेलोसिटी
बी ए इस रॉड का वेलोसिटी हो जाता है। देन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, -12 इंटू 10⁻⁻5, लेंथ ऑफ द रॉड 5, यहाँ पे स्पीड कितना हुआ 5। सो यहाँ पे आपको 25 इंटू 12, 25 इंटू 12, 300 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। Okay, fine. Huh? Now, these things we have to convert them into the meters, sir, because SI units are needed. All these are in centimeter. They are in centimeter. This 5 centimeter, AB centimeter में है और velocity भी centimeter में है. We have to convert that into actually the meter. तो ये कितना हुआ आपको? This will become E34. Velocity, length, magnetic field centimeter में है ना? Yeah, 10⁻⁻2 we have to adjust. This will be 300 into 10⁻⁻7. यहाँ पे this is there in the magnetic field कितना सेंटीमीटर में है. We have to convert it into meter per meter. 10⁻⁻2 यहाँ पे 10⁻⁻2 into 10⁻⁻2. Okay, fine. Okay, this EMF हो चुका है. So this is the EMF induced. So now what is the motional EMF induced? EMF induced due to motion of the rod means E12 plus E24 plus E13 plus E34. 0, 0, 0. ये वो 300 into 10⁻⁻7 वोल्ट. ये जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज द मोस्ट ईएमएफ ड्यू टू मोशन ईएमएफ, ये वेलोसिटी के वजह से. दिस इज अ लूप. सर ओके फाइन, यहाँ पे पोलैरिटी कैसे देंगे आप? ओके देन वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड रूल. ये जो थंब है, ये बी बी बार, इसका बी बार, ये वेलोसिटी, ये जो है ना द थंब है. सो दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ई बार. ये हुआ थंब, ये हुआ इंडेक्स फिंगर, पॉइंटिंग फिंगर बोलते हैं हम. ये बीच वाला अंगूठा, सो ये हुआ मिडिल फिंगर. thumb will indicate the direction of e bar. और ये जो पॉइंटिंग फिंगर बोलते हैं हम, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ बी बार. मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. फाइन. सो यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे. सो द डायरेक्शन ऑफ बी बार, द डायरेक्शन ऑफ बी बार इज आउटसाइड. बी बार हुआ आउटसाइड, वेलोसिटी और टुवर्ड्स. ओके फाइन. So the thumb will be directed downward. So therefore, this will be positive, this will be negative. Similarly, there is no EMF induced, so we can replace this with a cell. So the net EMF induced in the loop will be only due to this E34. No EMF induced in these three rods. Okay, sir, like और एक दिया है सर, like what about this one? No, this magnetic field also varies with the time. Due to magnetic field varying with the time, again we should calculate. That will calculate the EMF induced due to the variable magnetic field that varies with the time.
So next, EMF induced due to the time variation. This should be equal to A dB by dt. Area of cross section of rod 5 into 12 into 10 to power of minus 4. मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. 5 into 10 to power of minus 2 dB by dt कितना हुआ? 10 to power of minus 3. तो ये सब हो चुका है. 60 into 10 to power of minus 7 volt. ओके सर, इसका डायरेक्शन B bar flux is increasing. Flux is increasing. Okay, B bar out of the plane. So therefore, flux positive. Positive flux increases d phi by dt positive. EMF induced negative. Negative means यहाँ पे induced current will flow in anti-clockwise direction. Okay, fine. And already due to this cell also it is flowing. So दोनों EMF now will get added up. EMF induced will be, the formula will be E equal to minus S minus d phi by dt. So EMF induced here यहाँ पे negative हुआ. Okay, fine. Already this EMF induced is negative. Why negative? Because again यहाँ पे हम अगर लेंथ लॉ रखेंगे, फ्लक्स पॉजिटिव, then d phi by dt क्या हो रहा है यहाँ पे? d phi by dt is decreasing, no? B bar is positive, d phi by dt negative. EMF induced will be, okay, it is moving speed यहाँ पे, फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग. d phi by dt will be negative. d phi by dt positive, EMF induced will be negative. Okay, दोनों EMF like due to variation of time and due to change in space, और दोनों EMF यहाँ पे will be negative. So therefore the net EMF will be, we have to add up. EMF induced due to time, EMF induced due to the motion. तो दोनों का वैल्यू कितना हुआ? 300 into 10 to power of minus 7 plus 60 into 10 to power of minus 7. 360 into 10 to power of minus 7. Power dissipation will be E square by R. 360 into 10 to power of minus 7 is का whole square by resistance of the circuit. Resistance of the circuit यहाँ पे 6 milli ohm. 6 into 10 to power of minus 3. Okay, solving, we'll get the required answer. 216 into 10 to power of minus 9 watt. Very lengthy, very tough. यहाँ पे आपको you have to draw the diagram. यहाँ पे net EMF induced will be, the idea is very simple. There will be EMF induced due to the motion of the loop and also due to the change in magnetic field. And यहाँ पे कौन सा magnetic field है? Magnetic field यहाँ पे भी it's a varies with space. The magnetic field varies with the distance and also varies with the time. And the loop is moving. Little bit, I think, will be difficult for students to really analyze this much. We'll take the next question. Okay, no. What is this conventions current का? What is the general method, sir? आप एक बार हमको लेंथ लॉ थोड़ा क्लैरिटी देगी.
The basic use of Lenz's law is to predict the direction of current. So let me revise the basic convention. अगर B bar out of the plane in a region, if B bar is out of the plane B, then इसका flux will be positive. अगर B bar into the plane in a region, this will make it flux negative. Okay, fine. Next, अगर induced EMF positive or induced current positive, it will flow anti-clockwise. अगर EMF induced negative or current negative, the induced current will flow clockwise. Next, the basic formula E equal to minus d phi by dt. अगर flux increasing, next fourth condition, if flux increasing, positive flux increasing. Let me rearrange this one. There's a convention थोड़ा याद कर लो, very easy for you. Positive flux increasing, इसको हम d phi by dt पॉजिटिव करते हैं. अगर पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीजिंग, d phi by dt ये हुआ नेगेटिव. सिमिलरली लास्ट वन, अगर नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, d phi by dt will be negative. अगर नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, so d phi by dt पॉजिटिव. सब यहाँ पे हम फॉर्म में लगाते हैं. We'll come back to this question. There's a Lenz law convention, very important, जाके आप मेरे चैनल में देखिए. I explained very beautifully with examples. Please refer my channel. There's a basic Lenz law. Okay, we'll take the coil. Half a revolution. So there's a coil. Like of area. पता नहीं इसका like is it a rectangle, square? So इसका dimensions, just the given area, it can be it can be square coil or the circular coil. And it is rotating in a uniform manner perpendicular to axis of rotation of coil. The coil is rotating. So what is the axis? Axis will be, यहाँ पे हम axis ले लेंगे, and there is a magnetic field perpendicular to axis of rotation. So magnetic field यहाँ पे ले लेंगे. Okay, this is the magnetic field. This is about the coil rotating in a uniform magnetic field. The maximum voltage generated in the coil is, इसका what is the meaning of half a revolution? One revolution 2 pi. हाफ रेवोल्यूशन. सो इसका यहाँ पे हमको ओमेगा इंफॉर्मेशन दिया है. सो इसका ओमेगा वैल्यू हुआ हाफ ए रेवोल्यूशन पाई पर सेकेंड. तो पाई रेडियंस पर सेकेंड इसका ओमेगा का वैल्यू. इसका एरिया ऑफ द लूप पता है हमें. सो कितना 0.2 मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है n. B bar value 0.01. So what is the flux linking this? B bar dot A bar, B A cos theta. Then we'll differentiate this with respect to time, d phi by dt minus, then इसे पहले theta, it is rotating with constant velocity, so omega equal to theta by t. So cos theta हुआ omega t. Now इसको differentiate करेंगे. So then we'll get b omega sin omega t. What is the formula? E equal to minus d phi by dt.
d phi by negative of minus will become plus. So b omega sin omega t. Now अगर यहाँ पे कॉइल में एक ही टर्न है तो ओके फाइन दिस कितना टर्न्स है यहाँ पे 200 टर्न्स है सो देयरफॉर नाउ द फ्लक्स विल बी 200 टाइम्स यहाँ पे n एडजस्ट कर लो so this will become nba omega sin omega t मैक्सिमम वोल्टेज इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है कहाँ पे सो दिस nba ओमेगा सो e इक्वल टू e मैक्स sin ओमेगा टी सो e मैक्स का वैल्यू कितना हुआ NBA omega number of turns 200 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स 200 मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0.01 एरिया 0.2 एंड ओमेगा का वैल्यू पाई यहाँ पे तो 2 पाई बीटा यहाँ पे हम पाई पाई ऐसे रखेंगे इसका वैल्यू हुआ 0.01 200 टू 0.45 ये हुआ 4 पाई बाई 10 और 2 पाई बाई 5 आंसर आंसर यहाँ पे आंसर ले लेंगे दिस विल बिकम 5 सो बीटा का वैल्यू विल बी 5 ओके फाइन सो दिस अ कन्वेंशन सो वंस अगेन माय लेंथ लॉ रिवाइज कर रहा हूँ दिस वेरी इंपॉर्टेंट अगर कौन सा भी प्रॉब्लम है बी बार आउट ऑफ द प्लेन वहां पे फ्लक्स हम पॉजिटिव ले लेते और बी बार इनटू द प्लेन फ्लक्स नेगेटिव फाइन अगर सभी कैलकुलेशन करने के बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव सो वहां पे इंड्यूस करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज अगर ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव रहे तो इंड्यूस करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज देन दिस द फॉर्मूला यहाँ पे हम काम क्या करेंगे फ्लक्स फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव द फर्स्ट थिंग यहाँ से हम पता करेंगे लाइक फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव अगर पॉजिटिव फ्लक्स increases then d phi by dt positive positive flux decreases d phi by dt negative negative flux decreases yeah, this convention negative flux decreases d phi by dt positive negative flux increases d phi by dt negative substitute that d phi by dt with sign here this is very important negative flux अगर decrease हो रहा है बोले तो d phi by dt will be positive negative flux increase हो रहा है बोले तो d phi by dt negative substitute d phi by dt with sign then we'll get EMF sign. Then based on that, we should predict the current. Okay, we'll take the next question. The magnetic flux linked with a closed circuit of resistance 8 ohm varies with 10. The induced current is asking. So what is the, we know the flux d phi by dt. Differentiating this, we'll get the rate of change of flux. So this will be 10t minus 36. Then according to Faraday's law, EMF induced equal to minus rate of d phi by dt. This will be minus of 10t minus 36. The induced current is asking at what at time 2 seconds. At 2 seconds यहाँ पे हम calculate करेंगे EMF induced कितना है. This will be 10 into 2 minus 36. 20 minus 36 यहाँ पे हमारा voltage हुआ 16 volt EMF induced. Then इसका resistance E by R. So 16 by 8, 2 ampere. Okay, sir, like what is actually idea here? यहाँ पे जो हम there is some loop. Imagine यहाँ पे loop है and the magnetic field is varying with the time. कुछ इस तरह से vary हो रहा है. Then यहाँ पे induced current जो flow हो रहा है that we are calculating. And what is R? R is the resistance of loop. Closed circuit. What do you mean by closed circuit? Loop coil. इसका मतलब coil
or loop or a ring, some conducting, क्या तो रहने दो यहाँ पे अंदर. So only the its resistance is 8 ohm will apply it. Very simple formula. यहाँ पे this word little bit confusion. Closed circuit, sir. What do you mean by closed circuit? Closed circuit means some coil or loop or some network. Now we take the next one. A small square loop of side length L is placed inside a large square loop of side length L. The loops are coplanar and the centers coincide. The value of mutual inductance of the system. Okay, I needed a frame. यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है. स्मॉल स्क्वायर लूप. इसमें छोटा सा स्क्वायर लूप दूसरा वाला इसके अंदर रख देंगे, बड़े वाले के अंदर में रख देंगे. इसका लेंथ कितना है? एल. इसका लेंथ है स्मॉल एल. इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहे हैं. The value of mutual inductance of the system. Where L is equal to L square. इसका लेंथ कितना है? L square लेंथ है. And then the value of mutual inductance of the system. Small. So definitely, so this side length will be very less compared to it. So we'll calculate the magnetic field. We'll calculate the current. We'll assume the current I flowing. We'll get the magnetic field linking it. Then flux linking this coil. Then we'll get the basic idea. No, sir, what is this L equal to L square? इसका लेंथ जो है, this is 2 times of it. Then, how to, what is the basic approach? First, we'll calculate the magnetic field. We'll calculate the magnetic field due to this square loop यहाँ पे center में. Means ये जो अब so like means like why you are assuming current is one. So if you can assume current in this and you can calculate flux linking outer loop, that'll be very lengthy. What is the easiest approach is like assume current flowing in bigger loop, calculate magnetic field linking the smaller loop, then you can work out. ये जो will make it इसको और छोटा बना देंगे, so we'll get some basic picture. यहाँ से हम डी. तो इसका लेंथ हुआ L/2. L/2. This angle हुआ a 45 degrees. A 45 degrees. D का वैल्यू कितना हुआ? We have to calculate the D. Sin cos 45 L/2. So 1/√2. So D value हुआ L/2√2. So D means perpendicular direction. यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पहले ड्यू टू दिस साइड A12 साइड वजह से. जब एक करंट फ्लो होते रहता है, so जब एक करंट फ्लो हो रहा है रॉड में, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सराउंडिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. So at the center of the loop, magnetic field कितना है? Because of the flow of current in this rod. So we will go for electromagnetism. थोड़ा electromagnetism formula ले लेंगे. Magnetic field at 1, 2 is equal to mu naught I 4 pi B
sin alpha and a value, a or beta. So sin alpha plus sin beta, mu naught I o pi. D value will be L by 2 root 2. Cos 45, mhm, tan 45, to the calculation. Tan 45 equal to D divided by L by 2. Tan 45 का value हुआ 1. So D will be L by 2. Tan 45 will be opposite by adjacent. तो यहाँ पे हुआ इसका वैल्यू हुआ L by 2. Sin alpha, sin 45, 1 by root 2. 1 by root 2. So mu naught by 2 pi L. 1 by root 2, 1 by root 2 will be 2 by root 2. इसका वैल्यू हुआ root 2. और इसका टोटल वैल्यू mu naught I by pi L root 2. ये जो हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस रॉड ओनली. ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस रॉड 1 2 में, यहाँ पे एट सेंटर ऑफ द लूप इट विल प्रोड्यूस दिस मच ऑफ फील्ड. सो बाकी रॉड भी, like again you go for the right hand thumb rule. According to right hand thumb rule, how the B bar will be. यहाँ पे B bar आपको will be out of the plane. और जब एक करंट, सेम करंट ए रॉड में भी फ्लो रहा है, सो इसका मैग्नेटिक कितना होगा, इसका मैग्नेटिक भी इक्वल टू सेम थिंग. सो B12 इक्वल टू B23 इक्वल टू B31 इक्वल टू B34 equal to B41. This total will write it some B और B नॉट बोल देंगे. तो नेट कितना हुआ 4 B नॉट. नेट B12 B23 B34. This will become everything B नॉट. इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. म्यू नॉट 4 into म्यू नॉट I by L root 2. 2 root 2 mu naught I pi L. ये वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट टू ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द आउटर लूप. तो विल कैलकुलेट फ्लक्स लिंकिंग द स्मॉलर लूप इक्वल टू B इंटू एल स्क्वायर. इसका एरिया, स्मॉल लूप का एरिया कितना है L स्क्वायर. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, विल बी B. द नेट फील्ड विल बी B. ओके सर, लाइक मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे सेंटर पे फाइंड आउट कर रहे हैं, बट इधर इधर सेंटर के लगे चारों तरफ यहाँ पे तो फील्ड तो डिफरेंट होता है. तो व्हाट इज द असम्पशन, द लूप स्मॉल स्क्वायर लूप मींस हम जो फाइंड यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका वैल्यू हर इस लूप में सेम रहता है. द वैल्यू विल बी दिस मच, इट विल बी 2 root 2 mu naught I pi. गेटिंग मींस हम जो यहाँ पे सेंटर ऑफ द लूप में जो फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट थ्रू द लूप, बिकॉज इसका डायमेंशन इतना छोटा है कि द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज एट सेंटर इट विल बी सेम एवरीवेयर because of the condition small square loop. This we have to underline. This idea is very important. Small square loop. इसी की वजह से, स्मॉल वर्ड वजह के इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख रहे हैं. अदरवाइज वी कांट. अदरवाइज यहाँ पे मैग्नेटिक यहाँ हर जगह लूप में डिफरेंट रहता है, स्मॉल लूप में, सिंस इसका डायमेंशन इतना छोटा है कि द मैग्नेटिक विल बी कांस्टेंट थ्रू द लूप. देन विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू. दिस विल बिकम 2 root 2 mu naught I pi L स्क्वायर. व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम नाम दे देंगे. सो दिस इज X और
mutual inductance will be flux linking smaller loop due to current in the bigger loop. And हम जो flux calculate करे, there's a flux linking the smaller loop. Capital I word. Now यहाँ पे substitute कर लेंगे हम. So the values, this will be 2 root 2 mu naught I L square pi L. Current का value कितना है? I. Then this will be mutual inductance. इसका value calculate करेंगे. इसका value और 2 root 2 mu naught L square pi L. 2 root 2 mu naught का value कितना है? 4 pi into 10 to power of minus 7. Pi L. L square का value कितना है? L. यहाँ पे हमको 8 root 2 into 10 to power of minus 7. 8 को हम अंदर भेज देंगे. So this will be 64 into 2 into 10 to power of minus 7. So ये हुआ total 128 into 10 to power of minus 7. So what is the idea? आपको थोड़ा electromagnetism chapter का लेके magnetic field due to finite current carrying rod, this formula यहाँ पे use करना है. Then magnetic field यहाँ पे center of loop, हर एक रॉड के वजह से, लेके चारों रॉड है, एक लेके ड्यू टू वन रॉड व्हाट इज द फील्ड, नेक्स्ट ड्यू टू अदर रॉड, लाइक दिस ड्यू टू 4 rods व्हाट इज द नेट फील्ड. दैट्स व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. देन ये जो फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का, फ्लक्स लिंकिंग स्मॉल लूप टू द करंट इन द बिगर लूप, और फ्लक्स लिंकिंग द लूप टू द करंट इन द स्मॉलर लूप, दैट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस. Now I take the next question. A horizontal straight line 5 meter long extending from east to west. यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शंस डिफाइन कर लेंगे. नॉर्थ, साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. Component of Earth's magnetic field. Tension value of EMF induced in the wire when it's well off it. यहाँ पे ईस्ट वेस्ट. सो रॉड जो है इट इज फॉलिंग लाइक दिस. इसका रॉड ले लेंगे. लेंथ ऑफ द रॉड इज ईस्ट वेस्ट, along the east west. Right angle to horizontal components. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. ओके फाइन. इस डायरेक्शन ले लेंगे. दिस horizontal and falling vertically. So there's a formula of the motional EMF. ये वाला there's a rod. ये जो ब्लू कलर का है, जो कलर दे रहा हूँ, ये रॉड है. तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ फॉर्मूला विल लगा देंगे. B इक्वल टू NV. मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रॉड L, ऑल दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितना है? 0.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4. वेलोसिटी कितना हुआ रॉड का? 10. और लेंथ 5. This will become 3 into 10 to power of -3 volt. ओके सर, इसका डायरेक्शन बता देते सर, कौन सा एंड पॉजिटिव नेगेटिव है? तो विच एंड विल बी पॉजिटिव नेगेटिव? अगेन द फॉर्मूला, ये जो थंब, पॉइंटिंग फिंगर, दिस द मिडिल फिंगर.
A over direction E. Thumb will give direction of E bar. A pointing finger है, this will be the direction of B bar, and a middle finger, this will give direction of velocity. और velocity और इसका length equal to BLV, no? So this will be the length B bar velocity. No, so B bar velocity. So यहाँ पे thumb will be direction will be like this. यहाँ पे लगा दो तुम B bar into the plane. अपना हाथ घुमाओ. So like I'm यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बी बार आपका वो जो पॉइंटिंग फिंगर इसको बोलते हैं ना, तो दिस विल बी इनटू द प्लेन. फाइन. और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में रख दो. आपका थंब है ना, सो दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट. तो जिस डायरेक्शन थंब पॉइंट करता है, सो दैट एंड शुड बी पॉजिटिव. सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. This left hand thumb rule is what you should use. We'll take the next question. A square loop of side 10 theta and distance is placed vertically in east-west plane. Uniform magnetic field is set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 1 second. The magnitude of EMF induced. East-west plane. North, south, west, east. East-west plane इसको बोलते हैं हम. Okay, fine. Uniform magnetic field set up across the plane in northeast direction. This is east, this is west. Okay, fine. East-west plane बोले तो then this particular thing. And in northeast means it will make 45 degrees. So the B bar will make it. And A over plane, A over plane. Agree this or थोड़ा बहुत easy करने के लिए we'll take X, Y, Z axis. So loop कौन से plane में है? The loop is in look at this. A जो loop है, this is in east-west plane. और coordinate system भी define करेंगे. So this A over loop, each 10 centimeters square. जो magnetic field है, this is making angle 45 degrees. This is what assumption you can do. A over loop. Okay, agreed? Then, so what is the flux? Flux is equal to the magnetic field यहाँ पे vary हो रहा है. So flux equal to BS cos theta. Magnetic field कितना है? It is varying with the timer. So we'll differentiate this. D phi by dt should be equal to dB by dt s cos theta equal to minus d phi by dt. So minus dB by dt s cos theta. तो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. dB by dt decrease to 0 in 1 second. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.2. It will become 0 in 1 second. So the rate of change this will be 0.2 by 1. Area of cross section कितना है? 10 centimeter square. 10 centimeter square. So ये हुआ 10
into 10 to power of minus 2, 10 into 10 to power of minus 2. SI unit, meter square we have to convert. Agreed? That इसका angle 45 degree, cos 45 degree. So 0.2 is 10 to power of minus 2 and इसका 1 by root 2. A was 2 into 10 to power of minus 4 by root 2 or root 2 into 10 to power of minus 4. The magnitude of EMF induced पूछ रहे हैं. I think the A वाला 10 to power of minus 4 है. Okay, fine. So इसका value हुआ 2. Okay, sir, negative sign. It shows that like flux will be positive. Then this negative flux decreasing, positive flux or the flux is positive flux decreasing, d phi by dt negative, EMF induced positive. तो यहाँ पे induce current जो है, it will flow anti-clockwise. There's a purpose of why this negative sign we are retaining it. Equal to like magnitude. This is the equal to minus d phi by dt. dB by dt a negative sign. Okay, let me explain clearly. There's a basic definition, equal to minus d phi by dt. जो Mach field है, it is decreasing, so rate of change of flux will be negative. So यहाँ पे minus है. Minus of minus, this will be plus. Okay, fine. This is a Lenz's law convention. पिछले प्रॉब्लम में हम जस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ. टेक हेल्प ऑफ इट. दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे. Two coils have mutual inductance. The current changes in first coil according to the relationship I naught. The maximum value of EMF induced in the coil is. यहाँ पे दो कॉइल है. ये जो there's a coil 1. दूसरा वाला यहाँ पे. Agreed? दोनों कॉइल यहाँ पे कॉइल 1 कॉइल 2 जस्ट नंबर इंडिकेट करेंगे. इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया? 2 मिली हेनरी. द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई. सर कॉइल आर दे सर्कुलर? वी डोंट नो. जस्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये दो कॉइल ले रहा हूँ. ओके, एग्रीड. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फ्लक्स लिंकिंग द सेकंड कॉइल due to the current flowing in the first coil. Then we'll differentiate d phi 2 by dt m di1 by dt. So EMF induced second coil equal to rate of change of current in the first coil. Mutual inductance कितना? Value 0.02. di1 by dt. di1 by dt इसका value I naught omega cos omega t. 2 into 10 to power of minus 3, I naught का वैल्यू 5, ओमेगा का वैल्यू 50 पाई cos ओमेगा टी. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछ रहे. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ? 10. इसका कितना हुआ? 25 into 250 500 0.5 0.5 5
cos omega t. इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ 0.5 नो. The equation will be E max equal to cos omega t. So E max का value, E max is how much? 0.55. 0.55 we can write pi by 2. So our answer will be 2. आपको ये याद रखना है. Flux linking the second coil is equal to mutual inductance into first coil. So these are the formulas. What is the formula? Mutual inductance. EMF induced in second coil due to rate of change of current in first coil, or flux linking second coil due to current flowing in the first coil, or EMF induced in first coil due to rate of change of current in the first coil, or flux linking the first coil due to current in the second coil. अगर ये जो फॉर्मूलास आपको याद है तो आप एक कर सकते हैं. दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम इसका कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? दिस 0.5 ओनली, 0.5 पाई ओनली. सो दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A rectangular loop of length 2.5 meter and width 2 meter is placed at 60 degree to a magnetic field of 4 Tesla. The loop is removed from the field in 10 seconds. यहाँ पे the average EMF induced in the loop. Maximum अगर आप इसको इमेजिनेशन करके इस प्रॉब्लम सॉल्व करें तो लिटिल बिट इजियर रादर देन ड्राइंग डायग्राम. मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. बट एग्जाम में यू शुड नॉट ड्रॉ द डायग्राम. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर एक प्रॉब्लम में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, हाउ टू थिंक. बट इन एग्जाम यू शुड हैव दिस इमेजिनेशन, एबल टू अंडरस्टैंड. तुम लोगों को पता इमेजिनेशन ये जो डायग्राम में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो आपके मन में अगर तुमको ये कंस्ट्रक्ट करे तो देन राइटिंग इक्वेशंस विल बी इजियर. So this is the loop placed 60 degree to a magnetic field. Means जो magnetic field यहाँ पे link हो रहा है, this magnetic field, this will make an angle 60 degrees. Average EMF induced in the loop during this time. The loop is removed from the field in 10 seconds. So 60 degree, how to imagine this 60 degrees sunlight? What direction the 60 degree? Because this information not available. Perfect information not available. $60 degree to the magnetic field. Sir, how to assume that a जो like a 60 degree, if telling place 60 degree means the end cap of the loop will make an angle. इसका end cap रहता है. So what is end cap? End cap is the angle made by the area vector. Side length 2.5 meter, width इसका length 2.5, width है 2 meter. यहाँ का B value. This B bar vector will make an angle 60 degree with the loop. ये जो है, this is the loop. Average EMF induced. इसको loop को क्या हम will remove from the magnetic field. हम इसको हटा देते हैं. So what is average EMF? पहले flux linking calculate करेंगे. This will become B bar dot S bar BS cos theta. ये जो 60 degrees. No, what is the B value? For area of cross section LB,
cos theta. Now you have to ask question, sir. पहले आप इसको 60 बनाए, now आप इसको 60 बनाए. Now whenever we say 60 degree, pay the 60 degree to magnitude. ये जो 60 degree with respect to what we should measure? This is the angle between B bar and the end cap of the loop. There's a convention what they mention. Fine. So whenever they say this angle, the magnetic field makes an angle 60 degree with the loop. So like this 60 degree with respect to what? With respect to end cap of the loop. And what is end cap? End cap will be perpendicular to the loop. These are conventions. So यहाँ का B value 4, length 2.5 into 2 cos theta, cos 60 degree, 4 into 5 by 2 into 2 into 1 by 2. फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? 10 वेबर और 10 टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर्स. इसका यूनिट वेबर भी बोलते हैं. द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, सो ई एवरेज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स minus 0 by delta t. Change in flux, we'll write it delta phi. फ्लक्स का वैल्यू कितना है? 10. टाइम कितने सेकंड्स में? 10. So this will be 1 moment. Okay, fine. Okay, sir, fine. यहाँ पे आप -1 +1 एग्जाम में ऑन व्हाट बेसिस आप +1 या -1 लेते हैं? So we will bring the Lenz law convention. Flux is positive. Positive flux linking the loop is positive. किस लिए? Because component of B bar is out of the plane of the loop. Then अगर आप इसको लूप को रिमूव कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड से, so flux, positive flux is decreasing, so d phi by dt यहाँ पे हुआ नेगेटिव हुआ. और what is the formula? E equal to minus d phi by dt. Substitute this negative of negative, यहाँ पे substitute करेंगे, negative of negative will become positive. So EMF कितना हुआ ना? EMF will be positive. You have to substitute this with sign, no? D phi by dt with sign. Negative of negative will become positive. I'll write one more step. Some of you are getting confusion. इसका with the sign. Okay, bracket. See the bracket. Now this will become how much? D phi by dt. And we got positive. So therefore, option 1 will become. Lenz law convention. ये इसी वीडियो में आफ्टर ड्यूरिंग सेकेंड प्रॉब्लम आई एक्सप्लेन्ड. एक बार रिवाइज कर लो लेंस लॉ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल ईएमआई विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फैराडेस लॉ है, डायरेक्शन के लिए लेंस लॉ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी लाइक so this about the like a January shift ka. So we have completed the January shift. So we'll take the next, the April shift. Good morning, kids. We'll discuss now the JEE Main 2024 PYQ April shift. The chapter name is Electromagnetic Induction. Fine. I'll start with the first problem. A rod of length 60 centimeter rotates with uniform angle about its perpendicular bisector in a uniform magnetic field. The direction of magnetic field is parallel to axis of rotation. The potential difference between two ends of the rod. So we are discussing now the rotation of rod in an uniform magnetic field. This is the rod. This is a rod. It is rotating. This is the axis.
नो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इट इज गेटिंग डायरेक्टेड लाइक दिस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन दे चुके हैं parallel to axis of rotation. The potential difference between the two ends of the rod, this is O, A जो A, and this is what is the uniform magnetic field? This will be L by 2, this will be L by 2. Agar like what is the EMF induced? So directly, so this is the rod. पहले ऑफ रॉड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे हम बाद में. I'll come to this problem. Let me explain just basic concept. So this rod is rotating like this. So this will have the velocity. यहाँ पे there is a magnetic field. EMF induced is a small element में. What is the EMF induced? That's the same rod I'm assuming. और जो rod है वही यहाँ पे assume कर रहा हूँ मैं. The half length of the rod. पहले half length में कितना EMF induced हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे. तो this should be equal to कितना? DE should be equal to BV dx. इसका tangential velocity कितना है? At a distance x we assumed element. So EMF induced in the small element BV dx according to motion EMF. Then V value tangential velocity हुआ x omega dx. So A हुआ B omega x dx. EMF हुआ 0 to L. So total EMF induced will be B omega L square by 2. Now यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. इसका पोटेंशियल कितना होगा? हाउ टू गेट द पोटेंशियल? Again the left hand thumb rule. This is a thumb, pointing finger, index finger. Thumb का हुआ डायरेक्शन, thumb will give direction of E bar. ये जो pointing finger है this will be directed along B bar. ये जो middle finger है this will be along velocity vector. यहाँ पे लगा दो तुम B bar velocity. So ये जो end है this end will be positive and E bar vector will be directed toward the positive terminal. So which end will be positive? This end will be positive. This will be negative. Thumb will be along E bar. Index pointing finger along B bar. Middle finger along velocity vector. So this end will be positive. This will be negative. Then this rotating rod, इसका EMF कितना हो? B omega L square. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे replace कर देंगे. I'm explaining concept also. सर यहाँ पे EMF से इसका वैल्यू कितना है? EOB. इसका वैल्यू EOB. दोनों का वैल्यू this what you can write it. Potential difference पूछ रहे हैं AB. So we'll write equation VA plus EOA minus EOB minus VB 0. इसका तो 0 हो ना. ओके सर, लाइक आप ये इक्वेशन कहां से ला रहे हैं? KVL जहां पे आप शुरू होते हैं वहां पे पॉजिटिव प्लस VA. आप नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव हो रहे हैं. अगर तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव हो रहे हो तो राइज इन EMF EOE. Positive to negative terminal, fall in EMF minus EOB minus potential difference VB. So VAB equal to EOA minus EOB. So therefore the potential difference will be 0. This is a basic idea. Okay, fine. Okay, next problem ले लेंगे. Now, three identical resistors with two identical inductors connected to an ideal battery, and we have a key here. The current through the battery after a long time after switch has been closed. So this is something problem related to RL circuit, growth and decay of current in RL circuit. Then after long time, what do you mean by after long time? At T equal to infinity, जहाँ पे भी इंडक्टर है that should be short circuited.
द इंडक्टर विल बी शॉर्टेड. इसका सर्किट ड्रॉ कर लेंगे हम. जहां पे भी इंडक्टर है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो. दिस द कॉन्सेप्ट. जो बैटरी है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे जो इंडक्टर था उस जगह पे हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं. एंड दिस इज द 12 वोल्ट. आर का वैल्यू 12 ओम. देन इंडक्टर के जगह पे हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं. सो वाई शॉर्ट सर्किट सर? लाइक इंडक्टर कहाँ पे गए? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, I equal to E by R 1 minus e to power of minus t lambda. Put t equal to infinity. After long time means t equal to infinity. After long time. So put in this e to power of minus infinity. E to power of infinity का value कितना हुआ? 0. So what is the current? The current flowing in inductor will be a constant and equal to E by R. This was the basic circuit. Growth and decay of current concept just रिवाइज कर रहा हूं. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो करंट फ्लो हो रहा है, तो दिस विल कॉल स्टेडी स्टेट करंट. अगर यहाँ पे देखो, दिस करंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ओनली दिस ई एंड आर. नो. तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टर? इंडक्टर जैसे शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करता है. इंडक्टर विल यू हैव टू रिप्लेस विद ए शॉर्ट सर्किट एंड द करंट यहाँ पे सर्किट में डिपेंड्स ओनली ऑन ई एंड आर. So therefore, at t equal to infinity or after long time, जहां पे भी इंडक्टर है उसको शॉर्ट सर्किट लगा दो. सो तीनों रेजिस्टर्स नो दे आर पैरेलल. सर हाउ यू कैन से पैरेलल? यहाँ पे करंट बेस्ड हो, टोटल करंट, एक करंट इट विल गेट डिवाइडेड. यहाँ पे ब्रांच हो जाता है. जब भी करंट ब्रांच होता है बोलते हो, देन विल से दे आर पैरेलल. तो ये तीनों रेजिस्टर्स नो पैरेलल में. सो व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल? इसका हम R/3 कर देंगे बिकॉज पैरेलल. करंट थ्रू द बैटरी पूछ रहे हैं. ओके, दिस करंट. तो I equal to 12 by R/3. 12 रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 12 है. सो 3 एम्पियर. यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? दिस विल बी 3 एम्पियर. द करंट फ्लोइंग. सो द करंट, यहाँ पे जो करंट है ना, इट विल ब्रांच आउट. वेन एवर करंट ब्रांच, जब भी करंट ब्रांच होता है, देन वो तीनों जो भी ब्रांचेस है दे विल बी पैरेलल. देन द रेजिस्टर्स आर साइड टू बी पैरेलल, सीरीज पैरेलल. थोड़ा बहुत करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तुमको याद कर लेना है. एंड नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट. ये जो बेसिक फॉर्मूला. अगला प्रॉब्लम ले लेंगे. ये जो सिंपल एलसी ऑसिलेशंस का. इन एलसी ऑसिलेटर, इफ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम ट्वाइस एंड 8 टाइम्स रेस्पेक्टिवली. थोड़ा बहुत आई थिंक सर्किट आपको याद रहेगा. दिस इज द एलसी ऑसिलेशंस, सी एंड एल. What is the resonant frequency? F naught equal to 1 by 2 pi L line C. Next, the value of X. Resonant frequency will change with L and C. Twice and 8 times. Inductance का value will become 2 times. Capacitance का value 8 times. Then 2 pi 16 LC. यहाँ पे आप 4 बार निकाल दो. 2 pi root of LC. So 1 by 2 pi root of LC, F naught by 4. The resonant frequency of oscillator becomes X times its initial resonant frequency. So what is X? X का value. So X equal to 1 by 4. LC oscillations. Sir, okay sir, like we don't know this formula sir. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो लिटिल बिट यू कैन ब्रिंग योर SHM कॉन्सेप्ट. इनिशियली यहाँ पे चार्ज ले लो और Q minus Q
एंड यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, देन अप्लाई द केवीएल प्लस क्यू बाई सी माइनस और प्लस डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0. Then QCL I what is I dq by dt, this will be minus, and यहाँ पे capacity is discharging, so d by dt I will become dq by dt, so L d square q by dt square plus q by LC. ओमेगा स्क्वायर क्यू, ओमेगा के जगह पे क्या है 1 by LC, and this omega 1 by root of LC, and omega आप 2 pi f लिख सकते हैं. फाइन, एफ नॉट ओमेगा नॉट लिख देंगे. इवन इवन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद है, जब टीचर पढ़े तो याद है. वो जो याद रहे तो उससे भी आप फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं. अगर आपके पास यह फॉर्मूला आ चुका है ना, then what happen, you can solve this problem. It's better to revise formula, the resonant frequency in LC oscillation circuit 1 by 2 pi LC, और यही फॉर्मूला तुमको सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इक्वल 1 by 2 pi रूट ऑफ एलसी, दोनों का फॉर्मूला सेम है. सीरीज एसी सर्किट में भी आपको यही कॉन्सेप्ट रहेगा ना, लाइक इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर एसी सोर्स, और इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम फॉर्मूला. कंपेयर कर लो, like this you have to remember things. We'll take the next question. Find the mutual inductance. Find the mutual inductance in the arrangement when a small circular loop find the mutual inductance in the arrangement when a small circular loop of wire of radius r is placed inside a large loop of wire of side length L. The loops are coplanar. So what is the approach like? Mutual inductance and little bit electromagnetism, दोनों का like a concept यहाँ पे हम ले लेंगे. So this we will construct the इसका जो loop है, so this will write like this. ये जो outer loop है, इस पे हम यहाँ करंट एज्यूम कर लेंगे I. पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बिना लूप के. एक्चुअली दिस द बेसिक आइडिया. So like what you are doing, first we will calculate the magnetic field due to one side. Fine. So ये जो एंगल हुआ 45 डिग्री, इसका लेंथ हुआ L/2 and this will be D. At center O will calculate magnetic field due to this current carrying wire. Magnetic field due to finite current carrying wire. Electromagnetism by Savart law. Mu naught I 4 pi D sin alpha plus sin beta. याद कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फॉर्मूला है. Then what are alpha beta? Angle made by the line joining the point O with the upper end. This will be alpha, this will be beta. So alpha beta का वैल्यू हुआ 45 डिग्री. हमें D का वैल्यू पता नहीं है, इसका tan 45 ले लेंगे. इस ट्राइंगल में tan 45 इक्वल टू L/2 by D.
then L/2 equal to D, because tan 45 equal to 1. So D का वैल्यू कितना है? L/2. So we'll substitute all. Mu naught I 4 pi, D का वैल्यू आ L/2, इसका वैल्यू 1/2 and this is 1/2. Mu naught I 2 pi L, ये हुआ 2/√2. So total mu naught I by pi L/√2. This is the magnetic field due to one wire, one side. इस वायर के वजह से सेंटर ऑफ द लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, एंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेयर, बाय सावेट लॉ, electromagnetism chapter. Then what is the net field? Net field B naught should be equal to 4 times of B. Means ये जो वायर प्रोड्यूस कर रहा है सेम फील्ड ए वायर भी प्रोड्यूस करता है, ए साइड भी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इसका भी लेंथ कितना है, स्क्वायर लूप है, इसका भी लेंथ कितना है एल, और ए बी डिस्टेंस कितना हो जाता है L/2, द सेम थिंग डी. So what is the net field produced by the square loop at the center of, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. So this should become equal to 4 times mu naught I pi L/2. So इसका वैल्यू 2√2 mu naught I pi L. Then what is the formula? Flux linking the circular loop is equal to mutual inductance into, first we'll calculate the flux linking the circular loop. This will be equal to B naught into pi R square. B naught का वैल्यू 2√2 mu naught I pi L pi R square. Mu naught pi cancel हो जाता है, so this L and I high let B है. Mutual inductance का definition, flux linking the circular loop to the current in the square loop. Circular loop का कितना flux? √2 mu naught R square by L. So 2√2 mu naught R square by L. So this I and this I will cancel out, no? Or एक step. So 2√2 mu naught R square L. ये हुआ हमारा आंसर. This is a mutual inductance. So option 3 ले लेंगे हम. Fine. So आपको select Biot-Savart law, very very important. Simple, like बड़े बड़े like derivations, बड़े बड़े problems करने के वजह से simple है. What is the magnetic field due to the ring? What is the magnetic field due to finite wire? अगर छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रहे तो, याद है तो अपने आप ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. बिना बिना इस फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते. आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है, फ्लक्स कहां से करेंगे, फ्लक्स लिंकिंग द सर्कुलर लूप, उसके लिए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से हमको? थ्रू बायोट-सावर्ट लॉ. ऑल आर इंटरलिंक्ड यहाँ पे. अगला क्वेश्चन. ए वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस क्वेश्चन. टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ए एंड बी are placed in same plane with their centers coincident, their mutual inductance between them. यहाँ पे आपको लूप बी, इसका रेडियस बी है और एक छोटा सा लूप है अंदर, इसका इसका कितना है, दिस रेडियस इज सी. तो विल ड्रॉ इट. ये बड़ा वाला सर्कुलर लूप है, छोटा वाला यहाँ पे अंदर अंदर ड्रॉ कर रहा हूं मैं. दिस इज द रेडियस ए हुआ, इसका रेडियस हुआ बी. तो विल एज्यूम यहाँ पे करंट एज्यूम कर लेंगे. देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? बायोट-सावर्ट लॉ फॉर्मूला mu naught
I by 2B. This is a magnetic field produced by the current carrying circular loop at its center. So then, okay, fine. Flux linking the smaller loop. यहाँ पे हम will give name 192. There's a loop 1 loop, or loop A, loop B already is there. No, will use same symbol. There's a magnetic field. Current flowing in the loop B will produce magnetic field at the center. Then flux linking the loop A calculate करेंगे. That should be equal to magnetic field B naught into pi A square. And next question comes. So like आप B naught जो find out कर रहे हैं वो तो center of loop में है. And आप loop बोले तो there's everything sir, like loop बोले तो not point, उसका एरिया रहता है पाई ए स्क्वायर. हमें तो यहाँ पे magnetic field सेंटर ही पता है. व्हाट अबाउट दूसरी जगह पे? तो व्हाट इज द कंडीशन गिवन? यहाँ पे एक बार फिगर में देख लो. बी वेरी मच ग्रेटर देन ए मीन्स इसका रेडियस इतना छोटा है कि लाइक magnetic field आप जो सेंटर पे यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वो हर जगह लूप में वही वैल्यू रहता है. दिस इज अ मैथमेटिकल कंडीशन. So why we are assuming, why we are writing this? Because B very much greater than means the dimensions, इसका dimensions ये छोटा loop A का dimensions इतना छोटा रहता कि छोटा है कि the magnetic field हर जगह B naught ही रहता है. Okay, then यहाँ पे we'll write it B naught value mu naught I B current in the loop B 2B pi A square. Mutual inductance flux linking coil A due to current in the coil B. So mu naught IB pi A square 2B IB. IB get cancelled. So mu naught pi A square 2B. Mu naught pi A square 2B. Fourth option. And mutual inductance depends only on the physical, not on the current. How much of current flows? This will not determine the mutual inductance. Mutual inductance depends upon the geometrical conditions only, the physical dimensions. Look at the physical dimensions. A, what is A? Radius of the loop A. What is B? Radius of the loop B. Fine. बेटर याद कर लो ये सभी. एग्जाम में डायरेक्ट यू कैन वर्कआउट नो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कितना 10 या अराउंड 10 cases are there. Those 10 cases better remember, no? Mutual inductance, wire and loop, between two loops, square loop and circular loop. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The current in an inductor is given by 3t plus 8. The magnitude of EMF produced in the inductor, the self-inductance of inductor. I think coil, inductance coil के बारे में, solenoid. What are the names? Inductor. कुछ क्वेश्चंस में इसको solenoid भी बोल रहे हैं. You should not get confused. Solenoid of very high inductance only will call inductor. Simple idea. एग्जाम में solenoid inductor, इसको हम solenoid भी बोल सकते हैं. Fine. So what is the basic definition? The EMF induced across solenoid is equal to L into rate of change of current flowing through it. Self inductance के बारे में पूछ रहे. So what is EMF induced? 12 into 10 to the power of minus 3. L. Rate of change of current. di by dt. di by dt हमें क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि करंट के बारे में है. करंट इज इक्वल टू 3t plus 8 di by dt. इसका di by dt हुआ 8. 8 तो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 3t विल बी 3. इसका di by dt यहाँ पे वैल्यू रख दो. सेल्फ इंडक्टेंस 12 into 10 to the power of minus 3 by 3. ये हुआ 4 into 10 to the power of minus 3 or 4 milliampere. The answer will be 4. Simple definition. EMF induced across the inductance coil is equal to L into di by dt. अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो ये प्रॉब्लम इजी से कर सकते हैं आप. बिना फॉर्मूला नो 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 नॉट पॉसिबल. सो जाके तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ, फैराडेस लॉ,
ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। इसका करीब करीब आपको अराउंड 10 फॉर्मूला लग जाएंगे और एलसी ऑसिलेशंस, बस याद कर लो। विद दैट फॉर्मूला यू कैन मैनेज जो भी मैं हर एक क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ। तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स? फैराडेस लॉ इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। देन नेक्स्ट लेंस लॉ है, उसके बाद मोशनल ईएमएफ। फाइन। देन यहाँ पे हम थोड़ा ई स्क्वायर आर और लेंस लॉ का कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू वीडियो में आई एक्सप्लेन कन्वेंशंस, सो ट्राई टू अप्लाई देम। दिस is a motional EMF. This is a Faraday's law, Lenz law, something power related. These things you have to use formula. इसके बाद डायरेक्टली ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्क्यूट, ये जो फॉर्मूला ई आर वन माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस टी लैम्डा, वे लैम्डा टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्क्यूट। इसका ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला है, ग्रोथ एंड डीके का फॉर्मूला। देन एंड डीके का फॉर्मूला, दिस है ग्रोथ ऑफ करंट। डीके का फॉर्मूला ओनली इतना ही है, डीके ऑफ करंट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑलरेडी देख चुका हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस E2 di1 by dt, और फ्लक्स लिंकिंग सेकेंड कॉइल टू द करंट इन फर्स्ट कॉइल। LC oscillations, omega equal to 1 by LC, oscillation frequency. Then self inductance of a coil, mu naught Ni, mu naught N square S by L. Self inductance of a coil of different shape, ये जो स्प्रिंग जैसा जैसा स्प्रिंग शेप है ना, उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। आई थिंक देर आर 10 फॉर्मूलाज आर देयर। अगर ये जो फॉर्मूलाज आपको याद रहे तो इजिली यू कैन मैनेज। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, व्हाट डू मीन बाय ईएमएफ, व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स, लेंस लॉ, मोशनल ईएमएफ, ये तेरी सब पढ़ लो। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, सेल्फ इंडक्टेंस, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद में देन फॉर्मूला याद कर, देन कम फॉर प्रीवियस पीवाईक्यू, कुछ सॉल्व करो, देन यू गेट कॉन्फिडेंस, दैट बी इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। जो फॉर्मूला पिछले पिछले प्रॉब्लम में करे थे ना, उसी के ऊपर है। करंट चेंजेस फ्रॉम -2 एम्पियर टू एम्पियर इन 0.2 सेकेंड, ईएमएफ इंड्यूस, व्हाट इज द फॉर्मूला? इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, चेंज इन करंट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कौन पूछ रहे हैं, सो ईएमएफ कितना हुआ इंड्यूस्ड, 1 वोल्ट। इंडक्टेंस के बारे में चेंज इन करंट, करंट जो है -2 to 2 एम्पियर, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख देंगे, डेल्टा आई। चेंज चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल करंट कितना है 2, इनिशियल इनिशियल करंट कितना है -2, देन टाइम 0.2। चेंज 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 बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल का वैल्यू कितना है 2, इनिशियल का वैल्यू कितना है -2, सो ये हुआ L इंटू 4 0.2, L का वैल्यू हुआ 0.02 by 4, और 1/2 इंटू 0.2, और इसका 1/2 मीन 0.5, 0.5 इंटू 0.01, 1/2 0. So this value 0.5 into 0.01, इसका वैल्यू हुआ 5 मिली हेनरी। और एक ये ऑप्शंस मिस है यहाँ पे, we'll go for option 3, 5 मिली हेनरी। This change delta I, delta means final current minus initial current. नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेंगे, स्क्वायर लूप। सो यहाँ पे हम यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर लूप है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। इसका एरिया भी देख चुके हैं, 3.6 into 10⁻³ सोलेनोइड यूनिफॉर्मली बीइंग पुल्ड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड। यू नो स्क्वायर लूप, यहाँ पे हम यहाँ पे लूप है। सो दिस वी विल वर्क डन इज आस्किंग वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको लूप दिख रहा है, दिस वन। इसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो दिस लूप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दिस लूप विल कम आउटसाइड। तो यहाँ पे स्लोली मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कितना बी। इसको हम कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए कितना वर्क करना चाहिए। इसको लूप को हम स्लोली धीरे से निकालते हैं। तो द फ्लक्स, अर्लियर फ्लक्स इज इनिशियल फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग तो जीरो है, तो पहले फ्लक्स लिंकिंग कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स लिंकिंग इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स कितना 10, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 एंड 3 पॉइंट एरिया 3.6 इंटू 10⁻³ तो इसका वैल्यू हुआ 5 इंटू 3.6, 5 इंटू 3.6, इसका हुआ 18। 18 इंटू 10⁻⁻⁴ दिस द फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स लिंकिंग, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, कौन सा तो यूनिट दे सकते हैं आप। और 1.8 मिली वेबर। Then, what is the average EMF induced change in flux by time, or change in flux by time? So this will be by delta T. Initial flux कितना, final flux will be 0 because यहाँ पे magnetic field, no magnetic field, यहाँ पे no field. So 0 minus इसका initial flux हुआ 18 इंटू 10⁻⁻⁴, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में हम निकाल रहे। So this magnitude will only calculate the magnitude. इसका हुआ 18 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। Then how you define the average power? E average by resistance. So 18 into 10⁻⁻⁴, resistance का value हुआ 100. So this will be 18 into 10⁻⁻⁶. E square. Work done पूछ रहे हैं ना, तो थोड़ा calculation, let me check it. 0.5 into 10 will be 5. 5 into 3.16 will be 18. 10⁻⁻³ हुआ। then इसका स्क्वायर 18 स्क्वायर का 18 स्क्वायर 324। सो 324 into 10⁻⁻⁶, and this 100. So average power dissipation कितना हुआ, 3.24 into 10⁻⁶. How we define the average power? Work done by time, ये जो बेसिक फॉर्मूला। देन वर्क डन इक्वल टू एवरेज पावर इनटू टाइम, कितना टाइम में हम निकाल रहे हैं लूप को, डेल्टा टी। 1 सेकेंड में लूप को हम मैग्नेटिक से हटा रहे हैं। सो यहाँ पे 3.24 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1, यहाँ पे -6।
तो नियरेस्ट इंटीजर 3, approximately 3 into 10 to the power of minus 6 joule. The problem very easy with this approach. एवरेज ईएमएफ का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं. We can also calculate the charge flown. Charge flown is also equal to, because what is the average EMF equal to delta phi by delta t. Then इसको हम करंट बाय रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. एंड करंट को क्या बोलते हैं हम? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम. तो चार्ज फ्लोन कितना हुआ ना फॉर्मूला? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स इनटू रेजिस्टेंस. इवन आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन. कितना चार्ज फ्लो हो चुका है लूप में, दैट ऑल्सो यू कैन टेल बाय इन द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज नो वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता है. We can also calculate the charge flown through the circuit. There are some ideas are there. अगर आप लूप को मैग्नेटिक फील्ड से हटाते हो, देन कितना वर्क कर सकते हैं हम? दिस अ फॉर्मूला. देन कितना चार्ज फ्लो हो रहा है लूप में, that also we can calculate using formula. So these are some ideas you might have learned in the regular class. अगला प्रॉब्लम ले लेंगे. ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ये तो एसी सर्किट का प्रॉब्लम है. Then we'll take this one. A square loop of side 15 centimeter being moving towards constant speed. The enters magnetic the value of induced EMF in the loop. This is the magnetic field and this loop is entering. मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. Yeah. This is a loop. ये जो loop है, this is entering into this magnetic field. यहाँ पे ये जो भी ब्लू कलर का एरिया है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है. और this is a loop. ये जो loop है, now this is entering into magnetic field. Then the volume of EMF induced the loop at t equal to 10 सेकेंड. इसका लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी कितना दे रहा है? 2 सेंटीमीटर. और ये स्क्वायर लूप, इसका डायमेंशन कितना है? 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. देन द लूप इज एंटरिंग. थोड़ा लाइक वी विल हैव सम रफ डायग्राम. ये जो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे लूप यहाँ पे लूप ड्रॉ करेंगे. इसका लूप का कितना स्पीड है? v. यहाँ पे b है, हर जगह यहाँ पे b है. इसका वेलोसिटी कितना है? 2 सेंटीमीटर. और इसका लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर. नाउ इज आस्किंग एट 10 सेकेंड्स. और इसका मैग्नेटिक फील्ड का कितना विड्थ है? 50 सेंटीमीटर. तो 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस मूव कर सकता है लूप? सो द डिस्टेंस मूव बाय द लूप विल कैलकुलेट. दिस शुड बी इक्वल टू v into t, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लूप. इसका वेलोसिटी 2 और टाइम कितना दिया है? 10. So 20 centimeter distance, like it will move. So 20 centimeter means the loop will come, the value of EMF induced in the loop at t equal to 10 seconds. Velocity to a side loop 15 centimeter. 10 seconds में तो ये तो complete अंदर हो जाता है ना. एक बार देख लेंगे 1 second में कितना. This will move 10 centimeter. After 1 second ये 10 centimeter अंदर गए तो इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर. बचा कितना? 5 सेंटीमीटर. और दिस इज एट 1 सेकेंड.
t इक्वल टू 0। शायद मेरा डेटा, ओके देन 1.5 सेकेंड में लूप कंप्लीटली अंदर चले जाता है। t equal to 1.5 second, the loop will be completely in magnetic field. Then at t equal to 1 at 1.5 second में, at t equal to 2 seconds में the loop करीब करीब यहाँ पे आ जाता है। This will be 5 centimeter, यहाँ पे 15। इसका नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछे, लाइक ईएमएफ इंड्यूस पूछे। सो विड्थ ऑफ फील्ड, लाइक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे बोले तो 30 सेंटीमीटर विल बी हियर। तो कंप्लीट लूप इज देयर इन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। तो द फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है, डी फाई बाई डी टी विल बी 0। देन नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। जो मेरे को डेटा यहाँ पे है उसी वजह से आई डोंट नो इसका लेंथ अगर कुछ दे रहे तो आई वुड हैव चेंज्ड आंसर। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ लाइक द लूप इज जस्ट वन ऑफ द साइड इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके फाइन। तो द ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0। Okay, bacho, like these are the some problems what we have discussed based on the electromagnetic induction 2024. So you have to revise all the basic formulas, what all I told you. Just follow the guidance. First revise the concepts. There are around 12 or around 10 formulas are there. Recollect them. Solve at least two years previous means. Need not to solve all. At least 2 years now, if the time constraint is there. तो सॉल्व करने के बाद यू गेट सम बेसिक पिक्चर में मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और हम कैसे सोचना है और हमें क्या करना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर ग्रेट सपोर्ट। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। So we are a very small channel. Without your support, I cannot grow. So I request every student, जो जो आपको फ्रेंड्स है, बैचमेट्स है, उसको शेयर करो प्लीज। थैंक यू फॉर ग्रेट सपोर्ट।